So guys, in today's class, I'm going to start with some level of configuration like what I'm going to say, that is called document type, document number range, okay, tolerance group. These three things we are going to configure today. And then we are going to start the end user part. So in today's class onwards, you guys are going to classify between the end user and consultant. I mean, what is the difference between the end user and consultant? You guys are going to witness in today's class. How? Let's see. Okay. So before proceeding, I'm just going to show you a simple document posting in the SAP. Okay. So if you are getting any kind of vendor invoice, I repeat, if you are getting any kind of vendor invoice in SAP, so the T code for that is FB60. The T code for that is FB60. We'll be learning, ये हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के. जस्ट मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ कि एंड यूजर में हम लोग क्या क्या देखना है एंड उसके लिए हम लोग कितना तक प्रिपेयर करना है. Okay, I mean, what are the things we are going to discuss in the end user and what are the things we are going to prepare for that? Today we are going to cover this, cover that part. Okay, वो part हम लोग cover करने वाले हैं. So FB60 is a T code which we are going to use for posting the vendor invoice, simple vendor invoice. Okay, so in this part, in this vendor category, I need to select the vendor from whom I have received the invoice. So for the time being, I am selecting this vendor, Adani Enterprise. Acha, how to create vendor? That is a part of our accounts payable. So don't worry, guys. Very soon, I am going to start that. Okay. And now you have to put the date of invoice. Here is the amount of invoice. Say for example, 5,000 invoice amount. And this is a GL. So guys, this is called line item. Boys and girls, I think you have all remembered that while we are creating the GL, जब हम लोग GL बना रहे थे, तो in the second segment of the GL part, there is a option called line item display. याद है आप लोग को? आप लोग को याद है ना GL बनाने के लिए क्या क्या information चाहिए? So first is the type description, where you need to select asset, liability, income, expenses, long text, short text, and all that. In second page, control data tab. I hope you remember, guys, the control data tab. You have to select in case of balance sheet item, local currency, yes, taxation part are there, and thereafter there's an option called line item display. याद है किसी को? भूल जा रहे हो आप लोग? Yes, sir. See, say for example, I need to check this. So in control data tab, every GL we are selecting this line item display. Open item management, usually we are not selecting for the all type of GL, but line item display we are selecting. Okay, and after that there is a field status group G001. Sometimes we need to select G067, G005. So this G001, 61, 67, there is an importance. So now we are going to understand, sir, इसका मतलब क्या था? ये जो GL बनाने के टाइम पे हम लोग फील्ड स्टेटस ग्रुप सिलेक्ट करते हैं, ये जो GL बनाने के टाइम पे हम लोग जो लाइन आइटम डिस्प्ले सिलेक्ट करते हैं, इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? Okay, so the answer is, sir, this is called line item. 1, 2, 3, this is called line item. ये जो देख रहे हो ना 1, 2, 3, 4, this is called all the line item. इसको line item बोलते हैं. And this is the field. Okay, this is a tax jurisdiction field. Okay, assignment field. Okay, value date field, text field. These are all of the field. This is a line item. This is the field. So at the time of configuration of GL, you have to enable all these features. So line item display means if you are selecting line item display, so your GL name will be reflected over here, and it should be reflected at the time of document posting. So in GL line item, I need to select the expenses GL. Guys, from vendor we are doing what? A vendor के साथ हम लोग क्या करते हैं? कुछ purchase ही तो करते हैं ना? We are going to purchase something from our vendor, be it goods, be it service, capital goods, whatever. Guys, basic accountancy. Vendor किसको बोलते हैं? अच्छा, Yes, sir, creditor. yes, it's a syndicators. Usually हम लोग syndicators के नाम से जानते हैं, but in SAP और in real time हम लोग अभी vendor use करते हैं. So vendor से हम लोग कुछ buy करते हैं. We are going to buy something. Be it stock, be it input service, or be it capital goods.
यही तो बाय करते हैं ना वेंडर से हम लोग. तो दैट in this line item you have to select that GL. Okay, what you are going to buy from this vendor. So say for example, I have bought some printing stationery from this vendor and I'm going to select that GL. Printing stationery. Okay, and now 5,000. Okay, and you can see there's a text field. I need to put some item in text field. So I'm just putting the item name printing stationery. And here you can see that 5,000 credit, 5,000 debit is coming over here. And if I'm going to simulate this document, so you'll be getting the display of the document. Okay, if you are going to post such entry in SAP, so it will be look like this. ये एंट्री अगर ऐसे में पोस्ट करने जाओगे तो इस तरह का एंट्री रिफ्लेक्ट करेगा. इन एसएपी दिस साइन रिफर्स टू द क्रेडिट. जो अमाउंट के बगल में ये साइन रहेगा, इफ यू आर गेटिंग दिस माइनस सिंबल ऑफ एनी अमाउंट, इट मींस इट्स अ क्रेडिट आइटम. ये क्रेडिट हुआ है. Every one of you getting this? So now when I'm going to post this thing, you'll be getting so many different type. So you need to understand what is the meaning of it and how shall we configure, because right now we are in the configuration part. This is the end user part. Posting the vendor invoice, posting the customer invoice is a part of the end user task. ऑफिस में इंशाल्लाह जब आप लोग का करियर स्टार्ट होगा, यू विल बी गेटिंग दिस काइंड ऑफ जॉब, नॉट द कंपनी क्रिएशन और दैट काइंड ऑफ थिंग. So first of all, you have to start your career in SAP like this. But after that, when you'll become experienced and if you want to shape your career in SAP field, then only you are allowed to be configured something. So guys, in this simulation screen, you can see that there's a document type KR. सबको दिखाई दे रहा है? Document type, there is a name called KR. So in SAP, if you are going to post the vendor invoice, so type of such vendor invoice is KR. Type of such vendor invoice is KR. Okay. When it is for the vendor payment, it should be the KZ. When it should be the GL posting, that time it should be the SA. So in today's class, I am going to discuss about this concept. I mean, हम लोग ये start करने वाले हैं कि document type क्या है. इसलिए मैं पहले एक end user document post करके दिखा रहा हूँ. Okay, KR is a vendor invoice. KR is a vendor invoice. So if you want to post any vendor invoice in your system, in your company code, so there must be document type KR. आपका system में KR होना चाहिए. Guys, don't get it. मतलब थोड़ा इसको confuse मत हो जाइए. We are doing the configuration part in SAP. Right now in your life, whatever the software you have learned as an end user, be it Tally or other software, other accounting software, even Word, Excel also. You guys not a developer of MS Office, but in SAP, whatever the context we are discussing, that is all of the configuration part. So if your client is looking for, अगर उनका दरकार है कि उनका कंपनी कोड में vendor invoice post हो जाए, if your client wants that कि in my company code there must be a vendor invoice, so उसके लिए आपको अपना कंपनी कोड में KR डॉक्यूमेंट टाइप को एनेबल करना है. तो इसका एक लिस्ट में अभी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं इन व्हाट्सएप ग्रुप, जहां पे आपको डिफॉल्ट लिस्ट मिल जाएगा कि वेंडर इनवॉइस का क्या है, कस्टमर इनवॉइस का क्या है, बैंक का क्या है, एवरीथिंग. तो डॉक्यूमेंट टाइप KR फॉर द वेंडर इनवॉइस. ओके, एंड if you want to post this document in the system, so there's a item called post and shortcut key is Control S. So I just need to click on this, and while it will be posting, you can get a number. You can see that document number was posted on company code ICDL. Sir, this is called a document number, or Tally के भाषा में बोलो तो voucher number, and you have to configure this number range also.
हम लोग टैली पे जब एंट्री करते हैं सेल्स का परचेस का, तो डे बुक में जाकर जब चेक करते हैं तो ऑटोमेटिक देखना 1 2 3 4 नंबर हो जाते हैं वहां पे। इवन रेफरेंस नंबर ऑटोमेटिक आ जाता है अगर ऑटोमेटिक सिलेक्ट किया हुआ है तो। बट इन एसएपी you have to configure this, then only you are allowed to post any document। जब तक नंबर असाइन नहीं करोगे तब तक कोई डॉक्यूमेंट पोस्ट नहीं कर सकते। सो इन फ्यूचर आवर फ्यूचर अटेम्प्ट जितना सारा डिफरेंट डिफरेंट टास्क हम लोग करेंगे, लाइक कस्टमर इनवॉइस, वेंडर इनवॉइस, कस्टमर पेमेंट, वेंडर पेमेंट, वट एवर, जो चीज हम लोग करेंगे, ओके, सब चीज में हम लोग के ये नंबर रेंज फॉर द डॉक्यूमेंट एंड डॉक्यूमेंट टाइप देयर मस्ट बी, डॉक्यूमेंट टाइप एंड डॉक्यूमेंट नंबर रेंज हम लोग को डिफाइन करना। आप लोग को समझ में आया हम लोग आज क्या डिस्कशन करने वाले हैं? कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लीजिए। सर नीचे का जो वो नंबर दिया था वो तो अकाउंट्स ग्रुप से हम जो डिनोट किए थे नहीं वो ही आया नहीं था ना। नहीं 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 नहीं, अकाउंट्स ग्रुप जीएल का नंबर होता है, ये डॉक्यूमेंट का नंबर है, दोनों डिफरेंट है। अकाउंट्स ग्रुप में हम लोग ये नंबर देते हैं, ये वाला, ये जो 3 लाख का जो देख रहे हो, दिस इज डॉक्यूमेंट नंबर, सो इट इज अ जीएल नंबर एंड दिस इज अ डॉक्यूमेंट नंबर। गाइस आप लोग टैली जानते हो ना सब लोग? आई नो दैट लिटिल बिट कंफ्यूजन इन योर माइंड, सर ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? बिकॉज मैं पहले दिन से बता रहा हूँ कि हम लोग यहाँ पे जो सीख रहे हैं दैट इज द कॉन्फ़िगरेशन पार्ट, एंड ये जो आप देख रहे हो दिस इज एंड यूजर पार्ट। अभी तक आप लोग जितना सॉफ्टवेयर सीखे हो लाइफ में सब एंड यूजर पार्ट से सीखे हो, इसलिए थोड़ा सा हट के लग रहा है आपको। अगर आपको टैली ओपन करके देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जस्ट अ मिनट, हाँ, तो आप लोग को एंड यूजर कंसल्टेंट का ना समझ में आ जाएगा। गाइस थोड़ा रिस्पॉन्ड करना प्लीज, टू आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स, समझ में आए तो भी हाँ बोलो, ना आए तो ना बोलो, बट प्लीज रिस्पॉन्ड, साइलेंट मत रहिए, मुझे बहुत ही बेकार लगता है ऑनलाइन क्लास में साइलेंट रहना। सो हाउ कैन आई अंडरस्टैंड कि आप लोग समझे को नहीं समझो? सो टैली में एंट्री करने के बाद जब आप लोग डे बुक चेक करते हो तो ये जो वाउचर नंबर 1 2 3 4 49 48 ये आ जाता है ना ऑटोमेटिकली। समटाइम्स आप लोग को यहाँ पे ये जो नंबर है हाथ से लिखना पड़ता है, मतलब मैनुअल ओवरराइडिंग करके, यस तो सर। समटाइम्स सिस्टम से आ जाता है। यही तो किए हो ना, कभी क्वेश्चन पूछो टीचर से कि सर ये नंबर कैसे आ रहा है ऑटोमेटिकली, तो आंसर भी सिस्टम से आ जाता है। तो सिस्टम कौन बनाया? पहले के जो डेवलपर है, हम लोग एसएपी में वो काम कर रहे हैं अभी। ये एक के बाद दो, दो के बाद तीन जो नंबर आएगा, ये नंबर का कॉन्फ़िगरेशन एसएपी में हम लोग कर रहे हैं ताकि इंडिविजुअल्स को स्टार्ट यूज कर पाए। गेटिंग माय पॉइंट गाइस, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये जो F9 प्रेस करने यस से सर। परचेस आता है, F8 प्रेस करने से सेल आता है, डिड यू एवर आस्क योर टीचर कि सर क्यों आता है ऐसा? अगर पूछोगे भी आंसर एक ही मिलेगा, सिस्टम में ऐसे ही कॉन्फ़िगर किया हुआ है। सर एसएपी में हम लोग ये सब चीज बना रहे हैं अभी, जो टैली में जो हम लोग या अदर सॉफ्टवेयर में जो यूज करते हैं ना, एसएपी में हम लोग अभी बना रहे हैं। इफ यू वांट टू यूज दिस, तो आपको सबसे पहले ये सब चीज कॉन्फ़िगर करना होगा, मींस यू आर डेवलपिंग योर कंपनी कोड सो दैट योर कंपनी कोड कैन एक्सेप्ट ऑल टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन, और उसके लिए जो जो रिक्वायरमेंट है यू हैव टू कॉन्फ़िगर फर्स्ट। So if you want to post any document, if you want to post any document in SAP, so remember there must be a document number. Every document should be numbered. It's really numbered 1 2 3 4 or something like that. And after that, there must be a document type. If you are going to post the vendor invoice, so there must be configuration for the vendor invoice which will be allowed by your system. Getting my point? Yes, no? यस सर। So in today's class, we are going to configure these two things: document type and document number range. Guys, this is a document number. Your every document should be numbered. And document type, I'm going to share a list of document type. Just a minute. Huh? Check your WhatsApp group. This is a default one, okay? गगन तुम लोग को संडे बैच में दिए थे ना वो वाला? यस सर, पिछले संडे को सर, पिछले के पिछले में।
जस्ट a minute, हाँ। सर मैं इमीडिएट फॉरवर्ड कर दूं सर? नहीं, मिल गया मुझे, दे दो। गाइस प्लीज आप अपना व्हाट्सएप ग्रुप चेक करो प्लीज, सब लोग प्लीज, यू गाइस चेक योर व्हाट्सएप ग्रुप। सब अपना अपना व्हाट्सएप ग्रुप चेक करो। आई हैव शेयर्ड अ फोटो, ओपन करो, मैं बता रहा हूँ क्या मीनिंग है उसका। प्लीज एवरीवन, प्लीज रिस्पॉन्ड if any confusion regarding our discussion, regarding our configuration, feel free to ask। बिना समझ के हाँ मत बोलो। सो गगन, यू हैव प्रैक्टिस वेरी वेल। मैं तुम्हारा लास्ट संडे चेक कर लिया था। तो whenever you are practicing something, तो आपको क्या ये टफ लगता है कि कन्विंसिंग लगता है? नहीं सर, सर स्टार्टिंग में लगा था, बट जैसे प्रैक्टिस करना शुरू किया था तो चीज समझ में आ गया था सर, खुद कि हर एक कंफ्यूज डॉक्यूमेंट। होके कर रहे हो तो मतलब जो जो टास्क तुम परफॉर्म कर रहे हो उसके पीछे क्या लॉजिक है, लॉजिक समझ के कॉन्फ़िगर करते हो कि जस्ट फॉलो करते हो? नहीं सर, लॉजिक समझ के है सर। जैसे कि हर एक डॉक्यूमेंट का नंबर देने के लिए आपको हर एक अकाउंट का एक अलग नंबर देना होगा। अगर हम एसेट ओके, को दैट्स डिस्कस ग्रेट। करेंगे तो हमें एसेट्स का भी अलग देना होगा, कस्टमर का अलग देना होगा, वेंडर का अलग देना होगा। राइट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। यस हर्ष। क्योंकि सर, ओके यस गगन, अंडरस्टैंड, आई गॉट इट। यस हर्ष, व्हाट अबाउट यू सर? समझ के करते हो कि जस्ट फॉलो? सर अब पहले पहले फॉलो करते थे, अभी समझ रहे हैं, समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। अच्छा, ना आए तो बताना प्लीज, हाँ। ये सर। और मेरे रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मोहम्मद भाई, अनिरुद्ध, जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हो उन लोग से भी सेम क्वेश्चन है। गाइस, यू गाइस आर कन्विंस्ड? आप लोग कन्विंस्ड हुए हो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीएल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिस्कल ईयर वेरिएंट, पोस्टिंग वेरिएंट, कि यू गाइस जस्ट फॉलो? तो सर ने ओ डबल बी ओ कि हम लोग भी ओ डबल बी ओ करना पड़ेगा? तो देखो, फॉलो करोगे काम तो बन जाएगा, बट वो थोड़ा हेक्टिक लगेगा आपको, आपको ज्यादा दिन याद नहीं रहेगा। बट यू गाइस आर कन्विंस्ड, तो देन आप भी मेरे तरह लेक्चरर भी बन सकते हो, कहीं पे जाके आप लोग इंशाल्लाह अच्छा काम भी कर सकते हो। सो ट्राई टू कन्विंस योरसेल्फ फर्स्ट कि हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। एंड रेस्ट ऑफ द क्लास, प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स, अगर आपको 1% भी प्रॉब्लम हो, डाउट लगे कि यू आर फीलिंग दैट कि नो सर, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एट ऑल दिस पार्ट, आप क्यों कर रहे हो, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट, प्लीज पूछ लीजिएगा। क्लास जल्दी खत्म करने के चक्कर में हाँ मत बोलिए, ओके? So guys, I have just shared a picture with, I mean, in your WhatsApp group, and I'm asking few things from there. You just tell me. अच्छा, just tell me what is the document type for the GL. एक बार पिक्चर देखो और देख के मेरा क्वेश्चन का आंसर दो. What is the document type for the GL? ऐसे। Okay, her classifier is SA. Okay. अच्छा, what are the account types are there to be posted? I think there must be A, D, K, M, S. All other documents are there. ADKSM. Achha, now what is the meaning? What is the meaning of it, Sobosaji? What is the meaning of A? What is the meaning of D? What is the meaning of K? Did you remember? Posting variant. Guys, A for asset means fixed asset, right? D for customer, debtors, customer. K for vendor, creditors. S for the GL. M for the material. It means that in GL document, you are able to post all type of documents. In GL document, you can post vendor, you can post customer, material, asset also. Guys, just try to find out SKR. Yes, Anirudh, कुछ पूछना है तुम्हें? बोल रहे थे सर, हम तो तब क्लास चूज किए थे ना, ऑल क्लास काइंड ऑफ मतलब तो ऑल डॉक्यूमेंट ऑल पोस्टिंग ऑल, के लिए। क्लास मतलब ऑल, यहाँ पे ऑल स्पेसिफाई काइंड कर ऑफ, दिया। ओके ठीक है, यहाँ पे स्पेसिफाई कर ओके। दिया। अच्छा गाइस, डिड यू फाइंड द KR? आप लोग यहाँ पे KR फाइंड आउट कर पाए हो? KR. रेंडर इनवॉइस। Okay, very good. What are the account types are allowed in KR? Just tell me. AKMS. AKMS, right? And please compare this AKMS to the GL document. इसके साथ GL को compare करो, देखो क्या मिसिंग है। डी मिसिंग है। क्या मिसिंग है? It's D. कस्टमर। It's D मिसिंग है. D means customer. Yes, D means customer. Hey, vendor invoice में customer का कोई काम है क्या? Vendor invoice में customer का कोई काम है क्या? इसलिए वो मिसिंग है, नो सर। इसलिए वहां पे मिसिंग है। Getting my point, guys?
अच्छा, try to find out DR for the customer invoice, KR for the vendor invoice, DR for the customer invoice. Try to find out DR find out करो वहां से, एंड उसमें देखो क्या मिसिंग है, देखो के मिसिंग है, देखो उसमें DR के अंदर देखो के मिसिंग है, CDMS है। राइट? And every यस सर। document type there must be a document number range key like 19, 15, 14, 20. ये भी मिला आप लोग को? Did you find the number range key? यस सर। तो KR is the vendor invoice. Vendor invoice का number range key क्या है देखो तो वहां पे. What is the number range key for the vendor? देखो तो एक बार क्या है, 19? 19 19 It's 19. Now just look at this, guys. Just look at this. Document number starts with 19. लॉजिक समझ में आया अभी? Document number starts with 19. Everyone, yes, no? लॉजिक इज क्लियर गाइस? तो ये 19 का सोर्स कहां से आया पता चला? और डिफॉल्ट लिस्ट से आया वो सोर्स. यस सर। तो आज हम लोग क्लास में डिस्कशन करने वाले डॉक्यूमेंट टाइप एंड डॉक्यूमेंट नंबर रेंज, एंड देन वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, टॉलरेंस ग्रुप. शैल आई स्टार्ट? शुरू करूं? चले आगे. सर 19 यस के सर। पीछे बाकी जो नंबर है तो वो आप दिखाएंगे तो कैसे आया? क्या 19 के? हाँ वो तो नंबर रेंज, वो तो सर पीछे रेंज वहाँ रोज रेंज सिलेक्ट करना पड़ेगा, दिखाएंगे. जस्ट अ मिनट, वो रेंज सिलेक्ट करना पड़ेगा वो, ठीक है? तो चलिए हेडिंग करिए आप लोग, डॉक्यूमेंट टाइप. प्लीज गिव द हेडिंग डॉक्यूमेंट टाइप. यस यस यस, बोलो. सर डॉक्यूमेंट टाइप बाय डिफॉल्ट मतलब रहता है सर, उसको कुछ करना यस नहीं पड़ता क्या? यस, नो नो नो, कुछ करना है, वो डिफॉल्ट ढूंढना है कि आपका सर्वर में डिफॉल्ट टाइप है कि नहीं. आप बना भी सकते हो, बट दिस आर ऑल द डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन. DZ, DR, KZ, KR, these are all the default configuration. And this is universal, not only for India, entire world. If the language is English, so wherever you are in the world, in SAP user, so you'll be getting all the same document. I mean, same default configuration. That is the advantage of SAP. Okay. Just a minute, मुझे 1 मिनट टाइम दो, just a minute.
हेलो। ओके सॉरी गाइस, कॉल आ गया था। अच्छा सॉरी। अच्छा, तो यस, तो यू हैव टू कॉपी दिस ओनली। ओके, आपको ये सब नंबर याद रखने की दरकार नहीं है, छोड़ दो, जस्ट कॉपी करो ये वाला पार्ट, ठीक है। टी कोड फॉर द डॉक्यूमेंट नंबर रेंज। अच्छा, our primary purpose to find out all this thing के in our server SA DR DG DZ these are available or no। इसमें से कुछ डॉक्यूमेंट टाइप अकाउंट्स पेबल का है, कुछ अकाउंट्स रिसीवेबल का है। क्या सर मुझे सारा लिस्ट याद रखना है? आंसर इज नो, आपको सारा लिस्ट याद नहीं रखना है। सर क्यों, क्या याद रखे? सर जो आपके लिए रेलेवेंट है। इफ यू गाइज आर गोइंग टू प्लेस योर सेल्फ इन अकाउंट्स पेबल, तो जितना सारा केस है वो याद रखना है। इफ यू गाइज आर गोइंग टू प्लेस योर सेल्फ इन अकाउंट्स रिसीवेबल, तो जितना सारा डी से है वो याद रखना है। एंड any other process like asset accounting, GL master, so then S और A से जितना सारा डॉक्यूमेंट स्टार्ट होगा वो याद रखना। बट सर एंड यूजर लोग का कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड यूजर पीपल जस्ट पोस्ट करेगा। ये किसको याद रखना है? जो कॉन्फ़िगर करेगा। तो राइट नाउ व्हाट वी आर डूइंग द कॉन्फ़िगरेशन पार्ट ऑफ द SAP। तो guys just tell me one thing before proceeding the class, you guys are able to bifurcate between this two? What is the difference between the consultant and end user? ये दोनों के बीच differentiate कर पा रहे हो आप लोग? You guys are able to bifurcate? यस सर। So which one is better, end user or consultant? आपको कौन सा अच्छा लग रहा है? सर कंसल्टेंट ही अच्छा लग रहा है। Sir, if you are going to earn high salary, okay, if you want to place yourself in a good position, so sir, consultant is the option. You can do that. But end user part is very regular. Okay. For end user, there will be nothing much. You just remember the T code and fill in the blanks type task. But in consultant level, there must have, I mean, there are so many things you need to remember and everything. Okay. So anyway, one by one. So first of all, what you are supposed to do, sir? Right now, I am going to do with the FBN1. FBN1. So I'm going to check something in FBN1. What is my T code? It's ICKL. And then I need to click on this interval icon. Oh, sorry, FBN1 is a number range. Sorry. Achha, one more T code is there. Please type down this T code also. Sorry, थोड़ा सा इधर आ गया था. Document type OBS7. First we need to do OBS7, then FBN1. OBS7 is a document type like KZ, KR, SA, GA, I mean double A, AB. So OBS7, the document type is what? The document type is OBS7. Yes, Jit, these are all other consultant part. जितना सारा कर रहे हैं अभी हम लोग. Okay. Move on. Yes, move on. OBA7. Okay. So there is the option called position. So right now I am going to configure this one, SA. So you can see in my server SA is exist. SA stands for GL document. So GL document is exist. You just need to click on double click on this option and you'll be get the entire configuration. So in future, if you will get a chance to define the document type SA, so these are the content. अगर आपको फ्यूचर में मौका मिले कि डॉक्यूमेंट टाइप एस ए को आपको डिफाइन करना है, तो दिस आर द कंटेंट, ये कंटेंट है। गेटिंग माय पॉइंट? ये कंटेंट है।
Every one of you getting this? Yes, no? Yes, sir. So you can see number range is 01. Number range is 01. So nothing shall be changed. Okay. Acha, you guys can find out there is an option called reverse document type AB. You guys can find there is a reverse document type called AB. Now, what is the meaning of that? So, in remember one thing, guys, in SAP, there is a no chance for the delete the entry. I mean, after posting the document, you are not allowed to delete any entry. डॉक्यूमेंट पोस्ट करने के बाद आप डिलीट नहीं कर सकते हो. तो सर अगर आप कुछ गलत पोस्टिंग कर दियो तो क्या करना होगा? रिवर्स करना होता है. अकाउंट्स में इफेक्ट को नलिफाई करने के लिए रिवर्स करना होता है ना. आई थिंक यू हैव डन द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स चैप्टर इन योर अकाउंटेंसी मॉड्यूल and you all of you are known that ke, sir, if there is any mistake in posting, any kind of mistake, so if you want to rectify such mistake, you just pass the reverse entry. So debit should be reversed as a credit, as well as credit should be reversed as a debit. So my balance will be in the next, I mean in the previous position. So in SAP there is a concept of reversal document to rectify the entry, because after posting the entry you are not allowed to delete. You are not supposed to delete the entry. Getting my point? The document reversal part we'll discuss in later on class. I mean, in future class we'll be discussing this document, this part. I mean, document reversal part. Every one of you getting this? Yes, no? समझ आया सब लोग को? Yes, sir. So sir, nothing to do over here. अगर ऐसे आपका सर्वर में एग्जिस्ट है तो कुछ मत करना. अगर एग्जिस्ट नहीं है तो क्रिएट करना पड़ेगा. हाउ शैल वी क्रिएट सर? बाय क्लिक ऑन न्यू एंट्रीज. तो हम लोग का सर्वर में ऐसे जीएल डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट है ना, तो हम लोग को करने का दरकार नहीं है. अच्छा, केआर को चेक कर लेते हैं. केआर, दिस माय केआर वेंडर इनवॉइस. अब यहाँ पे देखो, गलती से कोई यहाँ पे कस्टमर को भी अलाउड कर दिया है, और कस्टमर यहाँ पे अलाउड नहीं होता है. ओके, बट कोई यहाँ पे कस्टमर को भी अलाउड करके रखा है. ये गलती होता है बहुत बार, तो हम लोग इसको चेंज करके सेव कर सकते हैं. नॉट एट ऑल. अच्छा, नेगेटिव पोस्टिंग का मतलब जानते हो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव पोस्टिंग? गाइस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव पोस्टिंग इन वेंडर? कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो नेगेटिव पोस्टिंग का मतलब क्या है वेंडर में? सर शायद एडवांस पेमेंट से रिलेटेड होगा. Yes, absolutely. Sir, the vendor basically that liability for us. Mohammed bhai, vendor basically the liability for us. We need to pay to the vendor. But sometimes is, as the Hertz is saying that, sir, advance something like that. Yes, if you are paying any advance to the vendor, so that time you are not getting the credit balance of vendor. The vendor balance will come in a debit side. Yes or no? That is a negative. I mean unfavorable situation. Hey, vendor तो liability का part है ना, तो liability का तो credit balance होता है as per accounts. बट वेंडर को अगर आप ज्यादा पैसे दे दिए हो, गुड्स लिए ही नहीं है, उससे इनवॉइस आया नहीं है, यू हैव पेड ऑल द अमाउंट, so that time it will be stand in your debit side na, advance to vendor. So this kind of posting will be allowed if you are allowing this thing, negative posting permitted. समझ रहे हो आप लोग? कंफ्यूजन है किसी का? सिमिलरली कस्टमर का डेबिट बैलेंस होता है, बट इफ यू आर टेकिंग एडवांस फ्रॉम द कस्टमर, सो दैट टाइम इट शुड बी अ लायबिलिटी. अनफेवरेबल सिचुएशन. एक कस्टमर तो एसेट होता है ना हम लोग का, an asset having the debit balance, golden rule, modern rule, whatever, but you have taken an advance from customer, you have not sent him the goods or services. So in your accountancy, in your books of accounts, that customer will alive as a credit balance. So customer credit balance is an unfavorable situation. That is a negative balance, I mean negative posting. Okay, not any minus amount.
Okay, so I think you guys have understood the document type. What is the meaning of document type? What is the importance of the document type in SAP? I think ये बात clear है. फिर भी कोई अगर confused हो, once more का request हो तो please बोलो. यहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट्स मिल जाएगा. वो लिस्ट देख के चेक कर लेना, सब मिल जाएगा. Yes, any confusion from your side? किसी का कोई confusion आप लोग के side पे please बोलो. Sprite, all clear? कि Mountain Dew? तो वही डर है और क्लियर है जो भी आपको लगे कंफ्यूजन. चलो क्लियर है तो अच्छा है. Now number range. Now guys, number range you have to define. Number range you have to define. So what is the T code for the number range? Now T code for the number range is FBN1. Okay, so right now I am going to post only GL document in my company code. So I'll be defining the number range for the GL document only. So guys, I think number range basically sorry 01. I think the number range is 01 for SA. एक बार चेक करें, कंफर्म करो. मुझे खाली GL डॉक्यूमेंट यहाँ पे पोस्ट करना है, तो आई थिंक नंबर रेंज इज SA. आई मीन सॉरी 01. द नंबर रेंज की इज 01. GL डॉक्यूमेंट टाइप इज SA एंड नंबर रेंज की इज आई गेस 01, राइट? पिक्चर में 01 ही है तो. Yes, sir. Yes, I sir. need to define this 01 first. Okay. So first you have to put your company code. ICKL is my company code. Enter. And you all know that this is a display icon and this is a configuration icon. I mean create icon. Or don't ask this what is a status. Status means how many you have used. NR means number range. Number range status means whatever the range you have selected. जो range आप select किया वो कितना use हुआ. जो range आप select किया वो कितना use हुआ. That is called NR status. जो number range आप select किया उसका use क्या है. That is the NR status. Okay, so how shall I? So click on the middle option. Here you have to select 01, the number range key. Boys and girls, please focus. 01 is my number range key. And in here option, we have to write down 2022. Because right now we are in 2021, 2022. हम लोग 21, 22 फाइनेंशियल ईयर में है. तो फाइनेंशियल ईयर का जो लास्ट ईयर होगा वो लिखिएगा आप लोग. Guys, in India we are not following calendar year. हम लोग इंडिया में कैलेंडर ईयर फॉलो नहीं करते. हम लोग इंडिया में क्या फॉलो करते हैं? हम लोग इंडिया में फॉलो करते हैं फाइनेंशियल ईयर. So financial year is starting from the April and ended up to March. So April to March we need to follow. Okay, so while you will be defining, so we are in 21, 22, so you have to write down 22. After 1 year, after the end of the financial year, you have to come back again and copy all the entries with 2023. एक साल बाद आके आपको दोबारा इस चीज को दोबारा ड्राफ्ट करना है with the fiscal year 2023. With the fiscal year 2023. Every one of you getting this? Yes, sir. तो ये हर साल का टास्क बन जाता है. जैसे टैली पे क्या होता है, ऑल्ट F2 करने से ही चेंज हो जाता है साल. अब जब रियल टाइम में टैली में एंट्री करने जाओगे, काम करने जाओगे, तो जैसे मार्च मंथ खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ऑल्ट F2 करके फाइनेंशियल ईयर चेंज करोगे और कुछ करने का दरकार नहीं है. वो टैली ऑटोमेटिक ले लेता है. यहाँ पे आके आपको कंसल्टेंट को अलाउ करना होता है. 2022 को वो 2023 कर देगा, तब जाके नेक्स्ट ईयर आप पोस्टिंग कर पाओगे. ओके. एंड हियर यू हैव टू डिफाइन द नंबर रेंज. जैसे अकाउंट्स ग्रुप का नंबर रेंज दिए थे, याद है आप लोग को? एसेट का, लायबिलिटी का नंबर रेंज दिए थे. उसी तरह यहाँ पे भी आपको डॉक्यूमेंट नंबर, जीत दिस टाइम नॉट GL नंबर रेंज, दिस टाइम विल बी द डॉक्यूमेंट नंबर रेंज. मतलब जो डॉक्यूमेंट आप पोस्ट करने वाले हो उसका नंबर क्या होगा, जो वाउचर आप पोस्ट करने वाले हो उसका नंबर क्या होगा, वो देने वाला है यहाँ पे. तो 1 से स्टार्ट करते हैं. तो 1 followed by 5 times 0 and 1 followed by 5 times 9. I'm going to follow like this. इसका मतलब इन अ सिंगल फाइनेंशियल ईयर
we can post this much of document. How many document? 99,000. No, not only 99,000. 6, 5. 1 followed by 6 times 0 and 1 followed by 6 times 9. Yes. So 9,99,999. This much of document we can post in a single financial year. एक single financial year में हम लोग इतना document post कर सकते हैं. कितना? It's 9,99,999. सर वो जीएल में ना सर, मतलब FB50 में अकेला इतना ही Yes, कर सकते not हैं only FB50, जितना जगह पे हम लोग का ऐसे AB मतलब 01 जिन जिन लोग का नंबर रेंज है. ओके सर. ओके, सबके लिए नंबर रेंज असाइन हो गया. प्रेस एंटर. अच्छा, इफ आई एम गोइंग टू पोस्ट द वेंडर, सो वेंडर के लिए 19 है, तो कस्टमर के लिए 15. सबको डिफाइन करना है कि करके. एंड आफ्टर डिफाइनिंग वी कैन सेव. सर साइड में जो EXT लिखा है वो क्या होता है? बता रहे. अच्छा, टैली यूजर, आप लोग टैली में 2 नंबर रेंज यूज कर सकते हो ना, 2 नंबर टाइप, एक ऑटोमेटिक और एक मैनुअल. चलो टैली है तो यहाँ पे साथ साथ दिखा देते. ये जो 103 है ये समटाइम्स ऑटोमेटिक आता है, समटाइम्स आपको हाथ से लिखने का भी मौका मिलता है ना. सर वो कहां से होता है? आप अगर मास्टर में जाके ऑल्टर वाउचर से फॉर एग्जांपल सेल, यहाँ पे जाके जब हम लोग चेंज करके ऑटोमेटिक को जब मैनुअल कर लेते थे तो हम लोग को मैनुअल हाथ से लिखने का मौका देते हैं ना. मोहम्मद भाई, FBN1 टी कोड इज FBN1. नंबर रेंज का टी कोड थे FBN1. ए टैली वाला, आप लोग को ये कॉन्फ़िगरेशन पता है ना टैली का? तो बाय डिफॉल्ट टैली में ऑटोमेटिक रहता है और हम लोग चाहे इसको मैनुअल कन्वर्ट कर सकते हैं. ऐसा कंपेयर नहीं करना चाहिए, बट मैं आप लोग के सामने इसलिए रख रहा हूँ ताकि आपको समझ आए चीजें कि जो अभी तक आप लोग सीखे हो सॉफ्टवेयर में और जो अभी सीख रहे हो दोनों में डिफरेंस क्या है. डिफरेंस इन द सेंस कि यू आर डूइंग द डेवलपिंग पार्ट और कंसल्टेंट पार्ट. तो गाइस ये टेक्निक टैली में आता है, तो आप लोग को आई थिंक जितने लोग को टैली आता है वो लोग ये कभी ना कभी लाइफ में किए होंगे. सो हर टैली में 2 तरह का नंबर रेंज होता है, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल. यू कैन सी ऑटोमेटिक एंड मैनुअल. एसएपी में भी 2 तरह का नंबर रेंज होता है जिसको बोलते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल. Internal and external. If I am going to click on this ext sign, it means that my document number should be external, means manual numbering. आपको हाथ से वो नंबर टाइप करना पड़ेगा. And if you are not selecting this external, it means you are selecting the internal option. In SAP, internal means automatic. तो अगर आप ऑटोमेटिक सिलेक्ट करके रख रहे हो तो डॉक्यूमेंट नंबर 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 ऐसे करके आएगा. एंड इफ यू आर सिलेक्टिंग एक्सटर्नल पार्ट, सो आपको हाथ से टाइप करना होगा कि 1 फॉलोड बाय 5 टाइम्स 0, 1 फॉलोड बाय 0001 ऐसा करके. तो इन एसएपी याद रखना, देयर आर 2 टाइप ऑफ नंबर रेंज. आई रिपीट बॉयज एंड गर्ल्स, इन एसएपी देयर आर 2 टाइप ऑफ नंबर रेंज, इंटरनल और एक्सटर्नल. एसएपी में 2 तरह का नंबर रेंज होता है, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल. ओके, हैव यू सर ये अंडरस्टूड द इनर डिफरेंस? स्टेटस, इनर स्टेटस सर वो जब आप नंबर पोस्ट करोगे कितना पोस्ट को काउंट करते हैं यहाँ पे. ये नंबर रेंज जब यूज करोगे तो यूज होने लग जाएगा ना, 1 2 3 4 करके. तो इनर स्टेटस आपको दिखाएगा कितना तक पोस्ट हुआ है, मतलब काउंट दिखाएगा कि ये नंबर रेंज के अंदर कितना रेंज यूज हो चुका है, कितना बाकी है. सर अभी तो हम जीएल का जो डॉक्यूमेंट टाइप है वो हम क्रिएट किए, राइट. तो अभी इसके बाद अगर हम चाहते हैं तो वेंडर का फिर से जब करना होगा यहाँ जब पे, यूज करेंगे तो फिर से करना होगा यहाँ पे. जितना मतलब डिफरेंट इसके डिफरेंट नीचे टाइप नहीं कर आएगा. सकते. हाँ, इसमें आके नहीं, यहाँ पे ये जो प्लस साइन देख रहे हो ना, तो यहाँ पे लाइन हाँ, इंसर्ट होते होते जाएगा. अच्छा अच्छा. ठीक है, दिस इज अ इंसर्ट, दिस इज अ डिलीट. ठीक है, सिलेक्ट करके अब इसको डिलीट करो तो डिलीट हो जाएगा. जीत, क्वेश्चन समझ में नहीं आया तुम्हारा? एक बार रिपीट करो क्वेश्चन, क्या पूछना चाह रहे हो? इंटरनल बेटा ऑटोमेटिक नंबर, यहाँ पे क्लिक ना करने से इंटरनल बाय डिफॉल्ट ले लेता है ये. तो सर इस पेज में आने का कोई मतलब ही नहीं रहा. किस पे जाने का मतलब नहीं रहा? अगर इंटरनल सिलेक्ट किए तो मतलब ये सिलेक्ट कर रहे हैं हम एक्सटर्नल के लिए, मतलब खुद से बना रहे हैं,
तो पागल, इंटरनल अगर किए ये तो इंटरनल, तुम तो और हो यार। ये जो है ना, ये आपको बनाना पड़ेगा। उसके बाद ये चॉइस देते हैं सिर्फ इंटरनल की एक्सटर्नल। इफ यू सिलेक्टिंग इंटरनल तो योर फर्स्ट डॉक्यूमेंट नंबर विल बी दिस। आप पूछे थे ना 19 के बाद वो सब क्यों आ रहा है, समझाइए। वो इसलिए आ रहा था बिकॉज 19 के बाद बहुत सारा जीरोस मेंटेन किया था। तो आप अगर इंटरनल सिलेक्ट करोगे सर, जैसे कि आप मैं इंटरनल सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो मेरा फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो पोस्टिंग है उसका नंबर होगा ये, सेकंड होगा 1 2 3 ऐसा करके होगा। अगर मैं इसको एक्सटर्नल कर देता हूँ तो सिस्टम ये नंबर नहीं देगा, ये नंबर मुझे हाथ से टाइप करना होगा दैट टाइम, डॉक्यूमेंट पोस्ट करने के टाइम पे। समझ आया? फिर तो फिर ये तो से करना होगा इंटरनली सर। ठीक है। हाँ, तो इसलिए तो इंटरनली की, एक्सटर्नल तो नहीं किया, थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा आप लोग के लिए। सेल के टाइम पे एक्सटर्नल करते, सेल बिल इशू करना पड़ता है ना, परचेज बिल तो मिलता है आपको, तो उसका भाउचर तो 1 2 3 4 करके ही तो काउंट होगा। गाइस नेक्स्ट लेवल पे जाए प्लीज, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो प्लीज, सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं। सर बोलो बोलो। सर आप टाइप किए थे यहाँ पे फॉर्म नंबर 2 नंबर, फॉर्म नंबर तो 1 6 टाइम 0 टाइप किए थे, तो हम्म, ये पहले 0 0 कैसे आया? वो 10 फुल अप 1 से फिल अप कर लेते हैं ना, पहले वो तो 10 ऑटोमेटिक आ जाता है। ये टोटल नंबर है, इसका लेंथ है 10। बात हुआ था ना जीएल के टाइम पे भी, कि इससे भी दैट टोटल नंबर है शुड बी 10। तो देखो 10 है, देखो ये 7 हम लोग ले लिए थे यहाँ पे, और यहाँ पे 3 अलग से जीरो भर के। और वैसे भी 1 से पहले कोई जीरो आया तो उसका वैल्यू कौन किया? जीरो का वैल्यू तो नंबर के पीछे बढ़ाता है ना, सामने थोड़ी बढ़ाता है। ठीक है। जीरो का तो यूनिक कैरेक्टर है ना पूरा न्यूमेरिक्स में, कि कोई भी डिजिट आगे पीछे बिठाओ चेंजेस होता है, बट जीरो को आगे बिठाओगे कोई चेंज नहीं होगा, बाद में बिठाओगे तो बहुत चेंजेस हो जाते हैं, राइट? तो इसलिए यहाँ पे टोटल 10 यस का सर। नंबर मेंटेन कर लिया। तो पहले करो तो क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, जस्ट वो 10 का लेंथ मेंटेन हो रहा है, 10 डिजिट का लेंथ मेंटेन हो रहा है, मोबाइल फोन नंबर की तरह। यस, आगे बढ़ो। नाउ प्लीज गिव द हेडिंग टॉलरेंस ग्रुप। प्लीज गिव द हेडिंग गाइस टॉलरेंस ग्रुप। एंड ये दोनों कॉपी कर लो प्लीज फटाफट। यस, स्टार्ट करें। सर इन यस एसएपी सर। टॉलरेंस ग्रुप मींस नथिंग बट इट्स अपर लिमिट। इन एसएपी टॉलरेंस ग्रुप मींस नथिंग बट अपर लिमिट। एसएपी में टॉलरेंस ग्रुप का मतलब नथिंग बट अपर लिमिट। ओके, इट्स अ अपर लिमिट। Okay, so we need to create a upper limit of anything, upper limit of any document, upper limit of document amount of anything. अच्छा, याद रखने एक चीज, if you are doing the work in ERP, if you are going to work in ERP, कोई ERP सिस्टम में अगर आप वर्क कर रहे हो, तो there must be upper limit, there must be a restriction। जैसे as you all know that while we are withdrawing any amount from ATM counter or ATM machine, तो अब सबको पता है कि the limit, there is a limit कि in a day you are allowed to withdraw that much of amount।
in a day you are allowed to withdraw this much of amount or something like that. पता है ना सबको? 15,000 ना, एक दिन में कितना विड्रॉ लिमिट है? 15,000 लिमिट है। तो 3 टाइम्स स्वाइप का ऑप्शन मिलता है, 15,000 का लिमिट मिलता है शायद एक एटीएम कार्ड से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लिमिट 15,000 ही है तो अभी की 25 है, जो भी है, देयर मस्ट बी अ लिमिट। आई थिंक इन अ सिंगल डे यू कैन स्वाइप योर कार्ड इन थ्राइस इन एटीएम काउंटर, एंड आप 15,000 से ज्यादा आप उठा नहीं सकते हो। तो देयर इज अ सेट ऑफ अपर लिमिट कि मैक्सिमम लिमिट कितना हो सकता है इन अ सिंगल डे। तो every ERP system there must be a restriction. In SAP also, while you are going to post any document, जब आप कोई document post करने जाओगे, while you are going to post any document in SAP, so remember one thing, you have to define the upper limit. कि what will be the upper limit of a document? एक document का upper limit कितना है? एक document का upper limit कितना है? उतना तक आप पोस्ट कर सकते हो, उससे ज्यादा का अलाउड नहीं करेगा। तो आपको सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का परमिशन लेना पड़ेगा। तो in SAP, whenever you'll be getting the term called tolerance, so tolerance का मतलब ये होता है upper limit। तो अभी सच में 25,000 उठा सकते एक दिन में एटीएम में? अच्छा, मेरा बैंक तो मुझे 15 ही देता है। एनीवे, अच्छा, so let's see how shall I, so OBA4, so guys this is the window where you can set the tolerance. Now click on the new entries. So do not write anything in this group icon, I mean group field में कुछ मत लिखेगा, let it be as a blank. Type your company code, that is ICKL, and here you have to put the amount, कि up to what amount, what will be the maximum amount of document you can post in your system। मतलब उतना था कि अमाउंट पोस्ट होगा, उससे ज्यादा नहीं। तो मैं यहाँ पे कुछ नंबर दे दे रहा हूँ। And what is the open item? Guys, after posting we are able to understand the open item। just here put any amount, and cash discount, say for example 2%। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार फॉर योर रेफरेंस। आप लोग का फ्यूचर रेफरेंस के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एनी कंफ्यूजन? No, sir. I'll be save this, okay? So it's being saved. Now we need to assign, and this time guys we need to assign with the user. So how shall I? OB57. So remember guys, how shall you assign the tolerance group? So for the first time, एकदम first time जब ये करने जाओगे, you have to click on the new entries, okay? And here you have to type your SAP user ID. Students who have the SAP access, you guys must have your own user ID. So you have to type your user ID and then save, and nothing else. Sir, once more, sure. This is the assignment, but this is not assigned with your company code. This is assigned with user. The first time I'm not going to assign with my company code. I'm going to assign with my user. So OB57 is a T code. You can see. Now click on the position, and here you have to type your username. What is my username? My username is sorry. Click on the new entries, and here
you need to type your username. Username means SAP username, and then save. That's it. In my server, it is already been created. That's why I'm not going to click on save option. But for the first time, when you guys will be doing it, you have to save first. It's once in a lifetime. एक सर्वर के लिए एक ही बार होगा, उसके बाद के टाइम दरकार नहीं होगा. नेक्स्ट टाइम कोई भी कंपनी कोड बना लीजिए, आपको और करने की दरकार नहीं है. सर्वर में एक ही बार ये करने के बाद आपको फर्दर फ्यूचर में कोई भी दूसरा कंपनी कोड के लिए ये स्टेप दोबारा करने का दरकार नहीं है, ऑटोमेटिकली हो जाएगा. क्लियर सर तो बोलो. सर जो हम सर्वर लिए हैं ये तो रेंट पे लिए है, तो ये तो हम शेयर पे लिए है, तो कोई एग्जन करने मान से लीजिए हो तीन जाएगा. तीन कोई एग्जन करने से अच्छा हो कोई जाएगा. एग्जाम करने से ओके अच्छा सर, कैसे पता चलेगा कोई एग्जन किया कि नहीं किया? अगर ऑलरेडी कोई करके रखा है, अगर ऑलरेडी कोई करके रखा है ये वाला पार्ट, so you just come to the position and type your ID, and if you are getting your ID over here, it means कोई ऑलरेडी करके रखा है. ओके अगर आप यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो न्यू एंट्री करना होगा. मतलब what you are supposed to do guys, because since you are sharing your server, so first you have to type OB57. आपको OB57 टाइप करना होगा. टाइप करने के बाद यू जस्ट क्लिक ऑन द पोजीशन. पोजीशन में आके आप अपना यूजर आईडी टाइप करिए, एंड हियर यू विल बी नॉट गेटिंग एनीथिंग, एंड यू आर फाइंडिंग दैट कि योर सर्वर, आई मीन योर यूजर नेम इज एग्जिस्ट. अगर ऐसे एग्जिस्ट है सुबह नाल अच्छा बात है, आपको दोबारा करने का दरकार नहीं. लेकिन अगर आपका आईडी टाइप करने के बाद अगर नहीं होगा तो आपको करना पड़ेगा. सर अपना आईडी बोलो, जो क्वेश्चन पूछ रहा था, आप अपना यूजर आईडी बोलो, एसएपी का यूजर आईडी बोलो. ECC 132. See, not coming. Okay. So you have to come to the new entities, and then you have to type ECC 132 and then save. Okay, I'm not saving right Okay. now because it's not mine, so you guys just do it. Okay. Okay. So guys, till the tolerance part, we have done our first level 1 configuration. हम लोग level 1 configuration कर लिए. Initial configuration we have done it. कितना क्लासेस लगा? ऑलमोस्ट काफी क्लासेस, 2 वीक तो लग ही गया हम लोग का, वो भी डेली बेसिस पे. संडे बैच होता तो मुश्किल होता. So guys, now in my company code ICKL, I can perform the end user part. But that end user part I'm going to show you tomorrow, because if I'm going to show right now, it will be a little bit hectic for you guys. You just go through all such things, and then we'll be doing in the next class. Guys, I have a request. I want to do this class tomorrow morning. Can I? कल सुबह हम लोग ये क्लासेस करना चाहते हैं. सैटरडे नहीं करेंगे, कल सुबह करेंगे. फॉर दिस वीक ओनली. कर सकते हैं? Okay, sir. No problem. Okay, so tomorrow Okay, we'll sir. be doing the same time, 8:15. Okay, so I'll be sharing the. Okay. अच्छा guys, 7 क्या तुम क्या लिखे हो? जीत समझ में नहीं आया. 7 कुछ लिखे है. Sir, 7 class. अच्छा क्लास का नंबर बोल रहे हो. Okay. अच्छा anyway, so guys, that's it for today. You just go through all this configuration. Tomorrow onwards, inshallah, we'll be starting the end user part. And that time I'll show you how to check the report, how to check the balance, and all the end user T code. Okay. So Gagan, just tell me one thing. You have taken the rented server. Just give me Yes, the sir. confirmation. Check that your server and my server are same or different. My instance number No, is sir. 08. My sir 10, sir. 10. So Gagan, just do me a favor. आपको तो configuration झटाझट आ जाता है. Okay. Yes, So sir. please develop a new company code in your server. Okay. Okay, sir. Because Okay, sir. in my server I have created so many company code, but since we are not in the same path, so you guys are not able to find out. एक फटाफट company code बना के इस tolerance तक कर लो. Okay. ठीक है sir. Then I'll share ठीक है the sir. credential with the rest of the class. बाद में लोग end user practice Okay, कर sir. लेगा. So guys, boys and girls, कल से आप लोग के पास 2 ऑप्शन रहेगा, कंसल्टेंट एज वेल एज एंड यूजर. जो आपको ठीक लगे आप प्रैक्टिस करो, बट प्रैक्टिस जरूर करना.
सर कंसल्टेंट के लिए अलग से सर्टिफिकेशन मतलब कराना पड़ता है या फिर एग्जाम देना पड़ता ग्लोबल सर्टिफिकेशन करना होता है हर्ष, जो एसएपी खुद लेता है एग्जाम, ग्लोबल सर्टिफिकेशन बोलते हैं उसको। तो जितना आप है? पढ़ाएंगे उतना ही का ये काम मॉड्यूल हो के जाता बाद है सर कंसल्टेंट का। एग्जाम नहीं कैसे नहीं नहीं, सकते हैं? थ्योरी पढ़ना और बहुत कुछ थियोरिटिकल नॉलेज जानना होता है। हार्डकोर कंसल्टेंसी की अगर बात करूंगा तो हम लोग क्लास और लेवल बढ़ाना होगा। ये तो मैं एकदम पूरा मतलब क्या बोलूं, थोड़ा एवरेज लेवल ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूँ। और अगर डिटेल कॉन्फ़िगरेशन आपको करना है तो हम लोग कोई पोस्टिंग के आसपास नहीं जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग पहले सीखो दोनों पैरिटी रख के। ग्लोबल सर्टिफिकेशन एग्जाम का क्राइटेरिया होता है कि यू हैव टू स्टार्ट योर करियर एज ए एंड यूजर। आपको थोड़ा एंड यूजर में काम का एक्सपीरियंस दिखाना पड़ता है, तब जाके अलाउ करते हैं वो लोग। मतलब मैं लीगल बात करूं, जो लीगली जो रूल है, बहुत लोग इधर उधर करे कर लेता है, बट दैट इज नॉट अ रियल प्रैक्टिस। रियल प्रैक्टिस इज दिस, ओके। तो काम सर यही रहेगा जो हम लोग कंसल्टेंट कर रहे हैं, बट पढ़ना पड़ता है थोड़ा और। आप लोग को तो पढ़ने के लिए कोई टास्क में दिया ही नहीं है अभी तक। ऑल आर द सॉफ्टवेयर एक्सेस, मतलब जो भी हो रहा है सॉफ्टवेयर में हो रहा है। पढ़ने के लिए मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट टाइप, एक्सप्लेन टॉलरेंस ग्रुप, हाउ मेनी टाइप ऑफ चार्ट ऑफ अकाउंट्स, डिफरेंशिएट बिटवीन दैट, दिस इज द थियोरेटिकल नॉलेज। एग्जाम में सब पढ़ना पड़ता है, ओके। आप लोग अगर पढ़ना चाहते हो तो मैं आप लोगों से शेयर कर सकता हूँ, आई वोंट माइंड, बट आप लोग के लिए बहुत हेवी प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। और क्लास में ऑल टाइप ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर, जिसको इंडिविजुअल अच्छा लगता है, किसी को कंसल्टेंट अच्छा लगता है, तो मुझे पैरिटी मेंटेन करके चलना पड़ता है। तो गाइस प्लीज एक बात कंफर्म कर लो, मैं बता दे रहा हूँ। From tomorrow onwards, you will be getting the access. If you have a SAP server with you, rented वाला या ICA वाला, so you will be getting an access, okay, for end user. तो आप लोग कम से कम एंड यूजर प्रैक्टिस कर लेना। अगर कंसल्टेंट का टाइम नहीं मिल रहा है, समझ उतना नहीं पा रहे हो, तो प्लीज एटलीस्ट एंड यूजर वाला काम कर लीजिएगा, तब तो ओके रहेगा ना। आई थिंक देयर विल बी नो प्रॉब्लम विद दैट, यस और नो। यस सर। सो प्लीज आप लोग इसको गिव अप मत करिए प्लीज, दिस इज माय रिक्वेस्ट। Tomorrow onwards, you'll be getting both the access, end user as well as consultant. जो ठीक लगा प्रैक्टिस करना, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। वीडियो रिकॉर्डिंग, टी कोड, ऑल you'll be getting. Okay. So Gagan, please do me a favor, just develop a company code, okay, in your server. ऑल कॉन्फ़िगरेशन है सर, अप टू दी Till that, टॉलरेंस till ग्रुप the तक। tolerance, till the tolerance, okay, till the tolerance. Because आपका टाइम काफी कम लगता है, मैंने देखा लास्ट संडे। You have a tremendous यस सर। speed, okay. So please just do it. ठीक